Hello everyone and very good afternoon once again. So let's see who are live with us now. Ruhani Jain is there, Amit, Shreya, Vansh, Swati, Manish, Pratima, Ritu, Anand, Chanchal, Gautam, Saloni, Ritu. Great. So welcome everybody and very good afternoon. So now we are starting with our second last chapter of the statistics portion, and this chapter is regression. So the chapter is very small but interesting chapter, good and scoring chapter is there. So let us begin. चलिए शुरू करते हैं. तो regression analysis. तो regression का मतलब क्या है? What is the meaning of the term regression? So regression is basically if you are having two variables, let's say x and y, these are the two variables. If x is given, then we have to find the value of y. And if y is given, you have to find out the value of x. तो इन शॉर्ट दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. So we have to simply calculate the missing figure or the missing value of the variable. So let us read the basics first. So in regression analysis, we are concerned with estimation of one variable for a given value of another variable. So if x is given, find y. If y is given, find x. Okay. On the basis of some average mathematical relationship between the two variables. So in order to find out any of the value, there must exist a relationship between two variables. तो in short, दोनों variables के बीच में कोई एक equation होगी और उस equation की help से हमें missing figure को calculate करना है. Alright? So a businessman may be keen to know his estimated profit. तो हम practical अगर example लें तो एक businessman को क्या चाहिए? उसको अपना estimated profit चाहिए. एस्टिमेटेड प्रॉफिट का पता लगाना है. किससे वो पता लगाएगा? विद द गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर उसने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए. तो जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन. तो रिग्रेशन एक वेरिएबल की वैल्यू को हेल्प करने फाइंड करने में हेल्प करता है. Similarly, there is one more example. An outgoing student may like to know the chance of getting first class in final university exam on the basis of her performance in class test. So one variable is class test, other variable is exam performance. तो अगर टेस्ट अच्छे हुए हैं तो एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा? अगर टेस्ट अच्छे नहीं हुए हैं तो फिर एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा? सो एग्जाम का जो रिजल्ट है ये हमें एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्ट करना है. तो फॉर एग्जांपल जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2023, तो ये आपने अपीयर कर लिया है. अब ये जब आपका एग्जाम हो चुके हैं उसके बाद में आफ्टर लाइक 2 मंथ्स रिजल्ट आता है. तो उस 2 महीने के अंदर हमारे माइंड में क्या चलता है कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, ये सारे टेस्ट अटेंड किए थे और उस टेस्ट का रिजल्ट था मान लो 80%. तो उस 80% के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे फाइनल एग्जाम का क्या रिजल्ट आ सकता है. So this prediction is basically the part of regression analysis. So the basic of the equation is y is equal to a plus bx. This is the basic equation. Other kind of equation can be x is equal to a plus by. So let us write the two types of equation. Two types of equation. One is x on y and other is y on x. So these are the two types of equation. One is x on y and other is y on x. Vidisha is asking some doubt set B. So first of all, we will be taking the chapter and after the end of the chapter, we will take your doubts. Okay. So around you can say 3:30, we will be taking your doubts. Before that, we can complete all the topics, right?
Shilpa is asking, this is under new or old scheme. See, this topic is common for both old as well as new. So there is no change. So we were talking about two types of equation. One is x on y and second is y on x. So what is the equation? X is equal to a plus by and y on x is y equal to a plus bx. So these are the two types of equation. Here, if we talk about x on y, so in x on y, x is basically a dependent variable. X is dependent variable, whereas y is independent variable. बिकॉज आपको यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू आ जाएगी. In y on x, y is the dependent variable and x is known as independent variable. तो y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. This a is known as intercept. a को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट. And b is known as slope. Slope of regression. b is known as slope of regression. a is known as intercept. Okay. So this is the basic point which we are discussing. एक टाइप का इक्वेशन हो गया x on y, दूसरा हो गया y on x. Now the main point is कौन सा इक्वेशन हमें कब काम में लेना है. So जब भी आपको x on y कैलकुलेट करना है, if you have to find y, to find x, if you have to find x, use x on y, and if you want to find y, use y on x. जो फाइंड करना है उसकी इक्वेशन आप यूज करेंगे. x फाइंड करना है, यूज x on y. y फाइंड करना है, यूज y on x. ओके, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड. नाउ x is equal to a plus by. This is basically the format of equation. ये इक्वेशन का फॉर्मेट है. अब ये इक्वेशन बनेगी कैसे? ये इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिए फॉर्मूला. We need some formula. So what is the formula to find equation x on y? Let us write that. X minus x bar equal to bxy into y minus y bar. Second one is y on x. So y minus y bar is equal to b by x into x minus x bar. So this is the formula to find regression equation. तो जब भी आपको regression equation का पता लगाना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो दो तरह की इक्वेशन हो गई, one is x on y, other is y on x. All right. Now here bxy and byx, these two are known as coefficient of regression. Coefficient of regression. ये दोनों हो गए रिग्रेशन के कोफिशिएंट. x on y का कोफिशिएंट है bxy एंड y on x का कोफिशिएंट हो गया byx. सो जिस तरह से कोरिलेशन में एक सिंगल कोफिशिएंट था, दैट वाज r. In correlation there was single coefficient r, but in regression there are two coefficients, one is bxy and second one is byx. So these two are the coefficients. Okay, understood till here everyone? Now we have to write the formulas. So let us write some of the formulas now. Formulas to find regression coefficients.
रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं? द फर्स्ट फॉर्मूला will be applicable when r standard deviation of x and standard deviation of y, these values are given. जब ये सारी वैल्यूज गिवन हैं तो फिर हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज r into standard deviation of x divided by standard deviation of y, r into neta x upon neta y. In case you have to find v by x, then r multiply by neta y upon neta x. So you have to be very careful कि कौन न्यूमरेटर में आएगा और कौन डिनोमिनेटर में आएगा. ओके, सो कौन सा न्यूमरेटर में आएगा और कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. सो नाउ इन शॉर्ट आपको एक बात याद रखनी है, जो पीछे है वो नीचे है. अगर y पीछे लगा है bxy, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीटा y आ जाएगा. सिमिलरली byx में भी है, जो पीछे है वो नीचे है. दैट्स इट. तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, देन योर फॉर्मूला बी ऑलवेज करेक्ट. ऑलराइट. So this is the first formula for regression coefficient. Now let's write the next formula, which is summation method. Now this formula is inspired basically from correlation only. तो correlation में भी हमने लास्ट सेशन में एक फॉर्मूला लिखा था. तो write the numerator as it is, n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by, अपॉन में वहां पे क्या था, रूट था. तो हियर यू डोंट हैव टू यूज रूट. रूट आपको यूज नहीं करना है. तो क्या यूज करेंगे, n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में ओनली y की वैल्यूज लिखिए, बिकॉज जो पीछे है वो नीचे है. राइट. तो पीछे क्या है, y है, तो इसलिए आपको y वाली वैल्यूज ही लिखनी है. x वाली वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं आएगी. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूले को लर्न करने की बेसिक ट्रिक है. सिमिलरली इफ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर बी बाय एक्स, तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर. तो x पीछे है तो x वाली सारी वैल्यूज नीचे है. ऑलराइट. So this is the formula for summation method. Now you have to apply this formula and get the result. दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा. There will be no change in the regression coefficients. फॉर्मूला आप कुछ भी यूज ले सकते हैं. Alright. Now the next point is, what is the method of solving regression equation? Theoretically question बनता है कई बार कि रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड का नाम है, दैट मेथड इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर. लीस्ट स्क्वायर मेथड. रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, दैट इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. नाउ लेट्स डू वन कंप्लीट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. तो x एंड y ये दोनों आपको दे रखे हैं. एस्टिमेट y when x is 13 and second part is estimate x when y is 15. Okay, so as per the requirement of formula, we have to write and find all the possible values. 2 4 5 5 8 10 6 7 9 10 12 and then 12. So these are the values. अभी आपको क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म करनी है एक तो, दूसरा है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं. ये सब हम एक ही क्वेश्चन में कर लेते हैं.
So as per the formula, we require sigma x and sigma y. So let us find the sigma x and sigma y, add all of them. How much is the total? 10, 20, 30, and then 34. Yes, 34 is correct. Then find the value of y, sigma y, it is 56. Then we also require x into y, 12, 28, 45, 50, then 96 and 120. If you add, you are getting how much? 351. This is xy. Next is x square. We require square of x. So not sigma x whole square. Here you have to find square of x and then add all the values. So 2 ka square 4, 4 ka square 16, 5 ka 25, 25, 64, and then 100. Total is 234. Similarly, y square 36, 49, 81, then 100, 144, and again 144. टोटल इज 554. तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है. नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy. Now according to formula we require n. How much is the n? N is 6. 6 sigma xy multiply by 351 minus sigma x into sigma y divided by n sigma y square minus sigma y whole square. So 56 whole square. Now you can simplify this and find the value of bxy. तो इससे आपका bxy की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. So let's simplify and give the result. So what is the value of bxy? Come on everyone, you can find this out. Then at last we will check from book also. Okay. You have to find out the value of bxy. Chanchal is again asking the same question. I have to ask questions regarding correlation. Doubts of correlation will be taken after regression. So you have to focus on regression first. Otherwise, you will ask the same thing in the next session, right? तो अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व करके बताएं व्हाट इज द रिजल्ट. 1.07. Saloni has given 1.07. Ruhani has also given 1.07. So let us write 1.07. Okay. Now, similarly, let's find byx. In byx, numerator is same. No change in the numerator. So 6 multiplied by 351 minus 54 into 56 whole divided by n sigma x square minus sigma x whole square. Now find out the value of b by x. How much you are getting b by x? How much?
0.8145, 0.8145. So Rishikesh has given the answer 0.8145. This is B by X. Now both the values are available. दोनों values आपके पास आ चुकी है. Now what is our requirement? Our requirement is to find the value of y when x is 13. Find value of y when x is 13. Okay, this we have to calculate. तो जब भी आपको y फाइंड करना है, use the equation y on x. Now y on x means y is equal to a plus bx. This is the format of equation, but we have to find this equation. So let us use the formula y minus y bar equal to b by x multiplied by x minus x bar. So y minus, what is the value of y bar? Y bar is 56 upon 6 sigma y upon n. How much is y bar? 9.33 is equal to b by x 0.8145 multiplied by x minus x bar. How much is x bar? 34 upon 6. X bar is 34 upon 6, that is 5.66. Now you can simplify and substitute the value of x. X की value आप यहाँ पे substitute कर सकते हैं. So y is equal to 0.8145 into 13 minus 5.66 plus 9.33. So let us simplify this. So how much we are getting? 15.3. So this is the estimated value of y. तो x की वैल्यू गिवन थी, y को हमने एस्टिमेट करना था. तो सिंपली व्हाट वी हैव डन, वी हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज यूजिंग द इक्वेशन y on x. Similarly, if you want to find y on x on y, then use the second equation. So to find x, we use x on y. X minus x bar equal to bxy into y minus y bar. Now x minus x bar कितना है? 5.66 equal to 1.07 y minus 9.33. Now this time what is the value of y? Y is 15. So put the value 15. 1.07, 15 minus 9.33 plus 5.66. So let's calculate. .72 or 73. This is the value of x. So similarly, you can find this value of x. तो दोनों में से एक फिगर मिसिंग होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन. So I think you have understood this concept. Now this question was actually very lengthy, but in exam normally short questions come कि आपको values given होगी, directly formula apply किया and get the result. Okay. Now this we have done the first question. Now, before moving towards further question, let us write few properties of regression lines.
Let's write properties of regression lines. The first point is two regression lines intersect each other at means. अगर दो रिग्रेशन लाइन है तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। तो जहां पर ये दोनों रिग्रेशन लाइन मीट करती है, वहां से क्या फाइंड आउट होता है? एक्स बार एंड वाई बार। देन सेकेंड पॉइंट, if two regression lines if two regression lines are perpendicular to each other, अगर दोनों रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, then what is the value of correlation? Then correlation will be zero. That means both the lines are unrelated. दोनों लाइन में कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज एक लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल और दूसरी है वर्टिकल, तो इसका मतलब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, नो कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ आर विल बी जीरो। ओके, so Rohit says crystal clear, Vedi says clear, that's great. Now the third point, if regression lines are coincident, what does this mean? It means कि इक्वेशन तो हमारे पास दो है, बट दो इक्वेशन के लिए एक सिंगल कॉमन लाइन ही फॉर्म हो रही है। देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन फॉर द टू इक्वेशंस। इक्वेशन तो दो है, बट दोनों के लिए लाइन कॉमन बन रही है, तो इट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। तो जब भी लाइन कोइंसिडेंट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? तो कोरिलेशन विल बी ईदर +1 और -1। तो कोरिलेशन की वैल्यू या तो +1 रहेगी या फिर -1। देन पॉइंट नंबर 4, R bxy and byx all must have same sign। इन सब का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, या तो सारे के सारे होंगे पॉजिटिव या फिर सारे होंगे नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव या फिर ऑल नेगेटिव। तो आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स मस्ट हैव सेम साइन, सबका साइन एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। नाउ देयर इज वन रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में क्या रिलेशनशिप बन रही है? तो यू कैन राइट इट डाउन। कोरिलेशन कोफिशिएंट is geometric mean of regression coefficient। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे आता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके। नाउ ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, एंड देन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? आर, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आर इज रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। So in this way, you can find out the value of correlation. Now, these are the five basic properties, five basic points for regression. And these are very important for theoretical questions also, as well as practical questions. So, दोनों के लिए काफी important है, right? So, Vidisha is clear, Apurva is all clear. That's perfect. Great. So now, after these properties, let me give you one simple question. Question is B
एक्स वाई इज 1.2, b by x is 0.75, and both are negative. Both are negative. Now find out the value of R, that is correlation coefficient you have to calculate. So what will be your result? Let me know. As per the formula which we have written above, find out the value of correlation coefficient. Find out the value of correlation coefficient. So anyone with the answer? Ruhani has given 0.949 positive. Roshan has given negative answer. Rohit has given negative answer. So each and every one has given 0.94 or 949. But sign should be positive or negative, because कुछ लोगों ने sign negative दिया है and majority have given positive sign. So which sign is correct? Positive or negative? Positive or negative? So यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, if you have to calculate this root of -1.2 and then -0.75. Now bxy and byx ये दोनों नेगेटिव, तो r भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव. वी हैव रिटन दिस इन पॉइंट नंबर 4. अभी जस्ट हमने ऊपर लिखा है, तो तीनों के साइन सेम होने चाहिए. अगर दोनों नेगेटिव है देन r विल आल्सो बी नेगेटिव. तो हमें हर जगह माइनस माइनस प्लस नहीं करना है. माइनस माइनस हर जगह प्लस नहीं होता है. एंड दिस वी हैव डन इन ज्योमेट्रिक मीन आल्सो. वहां भी मैंने आपको बताया था कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी नेगेटिव. अगर सारे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी पॉजिटिव. सो इन दिस केस ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव एंड वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन. सो कोरिलेशन विल बी -0.949. ओके. So Sindhu is asking, explain English only. I cannot understand Hindi. Okay. See, I'm using both the languages. I'm explaining completely each and every point in English, but I am repeating the similar thing or same thing in Hindi also, so that those students who belongs to Hindi medium or Hindi areas, they can also understand easily. All right, Sindhu. So no need to worry. I am using both the language together. Okay, fine. So we have done this. Bxy and byx. Now, 16th one you can try yourself. Now it is very much easy. Marks of 8 students are given in mathematics and statistics. And you have to find out the regression lines. That means you have to find both the equation x on y as well as equation y on x using our formula. Then when marks of a student in maths are 90, so if we have taken maths as x, so value of x is 90, then find out the marks in statistics, so y we have to calculate. So if you have to calculate y, then put this in the equation y on x. कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें. नो, you only have to substitute this value in y on x. अगर y फाइंड करना है, substitute in y on x. x फाइंड करना है, substitute in x on y. All right. Then Amrit Chaudhary is asking, if bxy is positive and byx is negative, so it is not possible. ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. अगर ऐसा गिवन है तो हम बोलेंगे दीज आर नॉट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ही नहीं है, बिकॉज ये रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं.
बिकॉज उसको फॉलो करने के लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा या सब कुछ नेगेटिव होगा। ऑलराइट, so this we can do now let's do this 17th one. The following data relate to mean and standard deviation of the price of two shares in a stock exchange. Coefficient of correlation is given 0.48, mean is given, standard deviation is given. Find the most likely price of share A corresponding to price of 60 rupees of share B. तो यहां पर आपको शेयर ए की प्राइस निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइस वैल्यू ऑफ शेयर ए व्हेन प्राइस ऑफ शेयर बी इज रुपीज 60। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शेयर ए को मान लेते हैं x एंड b को मान लेते हैं y। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, यूज द इक्वेशन x1y। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, x माइनस x बार इक्वल टू bxy मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार। नाउ x बार इज गिवन 44, bxy is not available, y minus y bar is given how much, 58। सो पहले हमें क्या करना है, बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है। तो बी एक्स वाई को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, आर इंटू नीटा एक्स अपॉन नीटा वाई। दिस फॉर्मूला वी हैड रिटन अबव, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। 0.4548 मल्टीप्लाई बाय 5.6 divided by 6.3. So let's calculate this and how much we are getting. 0.426. 0.426. Now, value of y is given how much? 60. So 60 minus 58, and here y plus 44. So what is the final value? So 44.85. Yes, we have got the answer, 44.85. This is the answer. Okay, Miss Palli Harshita is asking, root of any positive or negative integer is always positive, then how here it is negative? Because of the property of geometric mean. If you have attended the central tendency chapter, then I have explained you कि geometric mean की property है कि अगर सारे observations negative है, then your result will be negative. So if you are saying there is a loss of 5 lakh in first year and there is a loss of 2 lakhs in the second year, दोनों साल में loss है। Now if you are finding the average, that is the average geometric mean, तो क्या ये जो -5 लाख है एंड -2 लाख है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने पे क्या एवरेज पॉजिटिव आएगा, क्या लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा? इज दिस पॉसिबल? क्या 2 साल का जो लॉस है उसका एवरेज निकालने पे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हर जगह माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, so first part we have done, that is x1y. Now the second portion is the most likely price of share B you have to find when price of share A is 50. Now this time value of x is given 50 and you have to calculate y. So use the equation
y on x, y on x को काम में लेना है, so y minus y bar equal to b by x into x minus x bar. So y minus y bar is 58 equal to b by x. Now b by x हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, r into neta y upon neta x. So let's compute this. So how much we are getting? 0.54 into x minus x bar. Now what is the value of x and x bar? X is given 50, x bar is given 44. So y equal to 6 into 0.54 plus 58. So 61.24. This is the value of y. That is price of share B. तो शेयर बी की प्राइस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो खुशी गुप्ता हैज गिवन द आंसर 61.24. Shreya has also given the answer 61.24. So in this way you can easily get the value of x and y. All right. Now this is again similar kind of question. The following data relate to expenditure or advertisement in thousands of rupees and corresponding sales in lakhs of rupees. So expenditure on advertisement and then sales. Find the appropriate regression equation. Now you have to be very careful. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको आंसर किसका निकालना है. You have to find x on y और y on x. क्या फाइंड करना है आपको? Let's take the expenditure x and sales y. तो कैसे पता लगेगा आपको कि कौन सा यूज करें, x on y या y on x? तो वी हैव डन इन द बिगिनिंग कि वेरिएबल कौन सा डिपेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन का सिलेक्शन करेंगे. तो सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट. ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सेल्स भी ज्यादा आएगी, एडवर्टीजमेंट कम किया तो सेल्स भी कम आ जाएगी. दैट मींस सेल्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सपेंडिचर इज independent variable, right? So therefore we have to use which equation? Y on x. Y on x में y is the dependent variable, x is independent variable. So you have to use basically sales on expenditure equation. Sales on expenditure, that means sales is y, expenditure is x. So y on x. तो आपको y on x कैलकुलेट करना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है. So I think now you can do this easily. The main thing was this explanation कि कौन सा वैल्यू, कौन सा इक्वेशन आपको फॉर्म करना है. Okay. Now the further properties, कुछ और प्रॉपर्टीज जो एड ऑन हो रही है, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो. Change of origin and scale. The regression coefficient remain unchanged due to shift of origin, but change due to shift of scale. तो change of origin का इफेक्ट नहीं होगा, but change of scale का इफेक्ट होगा. So let us make a final table. Measures of central tendency, dispersion, correlation, and regression. Change of origin and then change of scale. तो सेंट्रल टेंडेंसी में दोनों का इफेक्ट पड़ता है, डिस्पर्शन में ओनली चेंज ऑफ स्केल, कोरिलेशन में दोनों का ही इफेक्ट नहीं होता, रिग्रेशन में ओनली चेंज ऑफ स्केल. तो दिस वी हैव टू रिमेंबर. इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है.
So this you have to remember. One is asking what is the weightage of these two chapters, correlation, regression. See, the normal weightage is very good. Normally, 4 to 6 questions come from this correlation and regression. So the chapter is easy as well as scoring. You can secure good marks. So this is the first property. रिग्रेशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट स्केल का इफेक्ट होता है. Then next, two regression lines intersect at x bar and y bar. जहां भी दोनों intersect करेंगे वहां से mean calculate होता है. This we have done. Then the third point also we have covered. The correlation coefficient is the geometric mean of regression coefficient. तो ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया. Now one more thing which is applicable for change of origin and scale. तो origin का तो असर नहीं होता, बट अगर scale का इफेक्ट होता है तो वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. So for that, if this is the format of equation, u is equal to x minus a upon p, v is equal to y minus c upon q. हमने इक्वेशन को इस फॉर्मेट में रखा. अब इस फॉर्मेट से आपको क्या करना है, p एंड q की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है. तो u वाली इक्वेशन से आपको मिलेगा p एंड y माइनस सी, यहां से आपको मिल जाएगा q. दोनों इक्वेशन से एक एक वैल्यूज आपको मिलेगी ना. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट b बाय x, हमें क्या करना है, q अपॉन p मल्टीप्लाई बाय b v u. अगर yx लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो यहां भी आपको क्या लिखना है, v u रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. एंड q अपॉन p, ऊपर q लिखा है नीचे p लिखा है, इसको भी हमने क्या लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में. जब बाय x रिवर्स ऑर्डर में है तो हर चीज आपको रिवर्स में ही चलनी है. तो q अपॉन p एंड b v q. अगर आपको b x y कैलकुलेट करना है, अब ये सीधा लिखा है तो आपको भी सब कुछ सीधा लिख देना है, p अपॉन q बी यू बी. तो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला बन जाता है. सीधा पूछा है हम भी सीधा लिखेंगे, उल्टा पूछा है तो हम भी उल्टा लिखेंगे. दैट्स इट. ओके. नाउ सिमिलरली इस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड u इज u इक्वल टू 3x, u प्लस 3x इक्वल टू 10. ये गिवन है. तो u इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे इसको इक्वेशन को अरेंज करना है इन द प्रॉपर फॉर्मेट. तो कैसे हम अरेंज करेंगे, तो u इज इक्वल टू 10 माइनस 3x. 10 माइनस 3x, बट हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा फॉर्मेट था u इक्वल टू x माइनस ए अपॉन पी. ये हमारा फॉर्मेट है. तो पहले हम x को आगे रखते हैं, फिर p को. ना x का कोफिशिएंट आपको क्या बनाना है, 1 बनाना. x के आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए. तो यहां भी हम क्या करेंगे, x के आगे क्या लिखा है, -3 लिखा है. सो डिवाइड द होल थिंग बाय -3. पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, -3 से डिवाइड कर लेंगे. सो डिवाइड एवरीथिंग बाय -3. डिवाइड कर लिया -3 से. नाउ व्हाट विल बिकम, x -10/3 अपॉन -1/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ u. सिमिलरली सेकंड को भी आपको अरेंज करना है. लेट अस अरेंज सेकंड वन आल्सो. 2y प्लस 5v इक्वल टू 25. तो पहले 5v इक्वल टू -2y प्लस 25.
अब y के आगे से -2 को रिमूव करना है, लेट अस रिमूव -2, तो डिवाइड एवरीवन विद -2, सबको -2 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, v इज इक्वल टू y -25/2 डिवाइडेड बाय -5/2। तो इस फॉर्मेट में आपने अगेन इसको अरेंज कर लिया। ये सिंपल अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। तो हमें यहां से दोनों जगह से कौन सी वैल्यूज चाहिए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज। वी सिंपली रिक्वायर दिस। So question says the regression coefficient of y on x is 0.8. What would be the regression coefficient of b on u? So b is required. b हमारा फॉर्मूला है b by x is equal to q upon p multiply by u. तो b by x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.80, q is given, हमने फाइंड आउट किया है अभी, p भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय bu. नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड गेट द रिजल्ट। सो फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, 8/75। if you want to find this in decimal, then you are getting 0.1066. So this is the value of bbu. So this was example number 19. तो डायरेक्टली bx में से कुछ भी गिवन रहेगा, bu या bu भी आपको कैलकुलेट करना है। Now the next one is 20th illustration. Here two regression equations are given and you have to find out the arithmetic mean of x and y. तो अभी हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है, टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट मीन्स। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वो जो x निकलेगा, दैट x इज नथिंग बट x बार एंड y इज नथिंग बट y बार। So you have to simply solve these two equations simultaneously and you will get your result x bar and y bar. So you can solve by any method, whether you substitute the values from option या दोनों equation को आप simultaneously solve करें, any method you can use. So let's solve. First is 7x minus 3y minus 18 equal to 0. And second equation थी हमारी 4x minus y minus 11 equal to 0. So if you want, you can substitute the value of y from it. यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 7x minus 3 into 4x minus 11, तो 7x minus 12x plus 33 and then minus 18. So you can get the value of x, that is 3. The value of x is 3. So this x is nothing but the x bar. Now substitute the value, 4 into 3 minus 11. So y is equal to 1. So therefore required mean is 3, 1. So these two are the arithmetic means of x and y. Now second part is identify the regression equation y on x. So now you can do it by yourself. Y on x calculate करना है. Use the formula for y on x, that is y minus y bar equal to b by x into x minus x bar. Similarly, third part is x on y. You can calculate this also. And at last, variance of x is 9. So standard deviation will be 3.
and what will be standard deviation of y, this we have to calculate. This can be done also easily. So here you can use the formula r into neta x on neta y equal to bxy. So bxy आपको पता चल जाएगा पहले ही. Then neta x is available, r is available, and simply calculate neta y. This can be done easily. Okay. So before moving further, let's take a break of 10 minutes and then we will be continuing with the topic. All right.
सो वेलकम बैक गाइस। तो अभी लास्ट हमने किया था रिग्रेशन। अब रिग्रेशन का जो लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास, दैट इज प्रोबेबल एरर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म प्रोबेबल एरर, या इसका यूसेज क्या होता है? सो प्रोबेबल एरर इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जब पॉपुलेशन हमारे पास गिवन है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल होगा, और जितना ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा, हम हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं कर सकते। लाइक वी आर अवेलेबल विद 1000 पेयर्स। 1000 पेयर अगर गिवन है और उसमें आपको कोरिलेशन रिग्रेशन फाइंड आउट करना है, यार आपको इट इज वेरी लेंथी टास्क। आप पहले सिग्मा एक्स निकालेंगे सबका, फिर सिग्मा वाई, वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, सो इट बिकम्स वेरी लेंथी। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, यूजिंग सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से कुछ डेटा सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन। बट जब भी सैंपल लिया जाता है, एरर विल बी इन्वॉल्व, उसके अंदर एरर आ जाती है, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, और जहां भी एस्टिमेशन आता है, एरर इज इन्वॉल्व। तो एरर इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन। तो इसके लिए हम एरर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाया है, दैट इज 0.0674 मल्टीप्लाई बाय 1 - r² divided by root of n. So here R means correlation, n means number of observations, जो डेटा आपको गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, वो आपको लिखना है। सेकेंड थिंग इज स्टैंडर्ड एरर। अगर आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, देन रिमूव 0.674। तो आपका फॉर्मूला क्या बचेगा, 1 - r² अपॉन रूट n, दैट्स इट। आगे 0.674 नहीं लगाना है एंड सिर्फ आपका ये फॉर्मूला बच जाएगा। नाउ this 0.674 can also be written as 2/3. That is, this is the rough fraction figure. एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू होती है 0.674, लेकिन एक रफली उसका जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 2/3. So these two are different types of errors. One is probable error, second one is standard error. तो दोनों के फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर लिखे हैं. As per requirement, we can calculate this. Okay. Now the next point is how to find the population. तो अभी यहाँ पे लिखा था कि पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो ओरिजिनल कोरिलेशन है, दैट इज आर प्लस माइनस द प्रोबेबल एरर. तो ओरिजिनल कोरिलेशन में आपको क्या करना है, प्रोबेबल एरर को ऐड कर देना है. यू विल गेट द ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रोबेबल एरर को यूज करने से आप एक्यूरेसी के पास में पहुंच सकते हैं. यू कैन रीच टुवर्ड्स एक्यूरेसी. तो आर प्लस माइनस द प्रोबेबल एरर, ये वहां पे फॉर्मूला बन जाता है. नाउ देयर आर सम बेसिक assumptions. The following are the assumptions with probable errors. The following are assumptions while probable errors are significant. One is if R is less than probable error. अगर R की वैल्यू कम है और एरर की वैल्यू ज्यादा है, एरर इतनी बड़ी है कि वो कोरिलेशन से भी ज्यादा है, दैट मींस हमारा रिजल्ट कुछ काम का नहीं है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, कि हमने दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन तो बना दिया, बना के हमने चेक किया क्या एक्चुअल में ये लोग कोरिलेटेड है या नहीं है. तो जब हमने रियलिटी तक पहुंचे तो पता लगा एरर तो बहुत ज्यादा है. लाइक कोरिलेशन इज 0.1 बट एरर इज 0.2. तो अगर एरर कोरिलेशन से भी ज्यादा है, दैट मींस कोरिलेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है. देन सेकंड वन सेज, तो फिर क्या रिलेशन होना चाहिए दोनों में, जो एक एस्टिमेशन फिक्स किया है हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने, कि कितना होना चाहिए दोनों के बीच में रिलेशन, परसेंटेज, फ्रैक्शन. तो R is more than 6 times of probable error.
R कितना होना चाहिए? R should be greater than or equal to 6 times of probable error. अगर probable error 0.1 है तो R की वैल्यू मिनिमम 0.6 होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो एरर का 6 गुना एटलीस्ट होना चाहिए कोरिलेशन। ओके, देन R lies between -1 to +1। कोरिलेशन की वैल्यू ऑलवेज -1 to +1 ही लाई करेगी। एंड द प्रोबेबल एरर इज नेवर नेगेटिव। एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। बिकॉज क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? बिकॉज फॉर्मूले में क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर है। और ये अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से ही कम होगी। सो दिस विल नेवर बी नेगेटिव। ओके, now from 21st, let us calculate the probable error. Assuming correlation coefficient is 0.8 and a sample of 25 pairs are there. So probable error equal to 0.674 multiplied by 1 minus 0.8 square upon root of 25. Simply apply the formula. दो वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, वन शुड बी आर एंड सेकंड वन इज एन। अगर दोनों अवेलेबल है देन ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व। So your result is 0.0486. All clear till here? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Let me know, because the chapter is near to completion now and then we will be moving towards exercise questions. So this was illustration number 21. Now let's solve 22 also. R is given, N is given. Find the probable error of the correlation and determine the limits. साथ में आपको limits भी बतानी है। So yes, we will discuss the limits also. तो पहले calculate किया जाए probable error को। तो 0.674 multiply by 1 minus r square, so 0.7 square divided by root of 64. So 0.674 into, simplify this and get the result. So we are getting 0.043. 0.043. This is the error. Now you have to find out the limits. So limit calculate करनी है तो original r plus minus the probable error. R कितना है? 0.7 प्लस माइनस 0.043। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो प्लस करने पे वैल्यू क्या आ रही है? 0.743, माइनस करने पे 0.657। तो दीज आर द टू लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये दोनों आपके लिमिट्स आ गई है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। So as you can see this note, यहाँ पर आपको डिटेल में कुछ भी गिवन नहीं है। This detailing is available normally in higher level studies like post graduations and all. वहां पर थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट अभी जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन दो टर्म्स का इंट्रोडक्शन दिया है and nothing else. So Rohani says absolutely clear. Dhruv says all concepts are clear. Perfect. Then yes, one more thing is there. Coefficient of determination. Now, what is the coefficient of determination? तो coefficient of determination का मतलब होता है it is square of correlation coefficient. Correlation coefficient के square को ही हम क्या बोलते हैं? Coefficient of determination. And second one is coefficient of non-determination.
Non-determination is 1 minus r square. 1 minus r square. So these are the 2 points, determination and non-determination. So coefficient of determination is can also be written as explained variance, explained variance upon total variance. This is coefficient of determination. Second is coefficient of non-determination. It is unexplained variance upon total variance. So first one is explained upon total, second one is unexplained upon total. So this is for theoretical reference only. So coefficient of determination का मतलब है ये है कि हमें पता है वेरिएशन किस वजह से आ रहा है, एंड अनएक्सप्लेन का मतलब है हमें नहीं पता कि डेविएशन क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी expenditure on advertisement and sales, these are the two variables, and for this correlation coefficient is given 0.9, right? Now if we calculate coefficient of determination, so square of 0.9, it will become 0.81, or if you write in percentage, it will become 81%. 81%. तो इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल जितना भी वेरिएशन है उसमें से 81% इज ड्यू टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, कि हमें पता है कि वेरिएशन किस वजह से है. सेल्स इंक्रीज हो गई, बट सेल्स इंक्रीज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट. दिस इज द एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 19%? सो 1 minus r square, that is 1 minus 0.81. So it is 19%. तो ये 19% क्या है? This is unexplained variance. बाकी 19% में जो चेंज आया है वो किसी भी वजह से हो सकता है. हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, उसका यूसेज बढ़ गया, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है डिमांड चैप्टर में. उसके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस वजह से डिमांड राइज हो सकती है. तो वन इज एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एडवर्टीजमेंट की वजह से, एंड रेस्ट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस. ओके, so this is done now. Then let's do the questions. So set A के हमने कल कुछ questions start किए थे. Up to 31 we have done. Now let's come on question number 32 and give the answer. If there are two variables x and y, then the number of regression equations could be. तो कितनी regression equation बनती है हमें पता है. Only two regression equations are there, x on y and y on x. Next, 33. Blood pressure of a person depends on age. Blood pressure dependent है किस पे? Age पे. So blood pressure is the dependent variable, age is independent variable. So blood pressure on age. So regression equation of blood pressure on age. Okay. Vidisha, they says your explanation is really mind blowing and awesome. Thank you so much, Vidisha. Then 34. The method applied for depriving, it is not for deriving regression equation is known as. तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं रिग्रेशन में? आंसर इज लीस्ट स्क्वायर मेथड. The difference between observed value and estimated value.
ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब है जो हमने देखा है, जो एक्चुअलिटी है। तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड सेकंड वन इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, जो हमने अंदाजा लगाया है। तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड में कुछ ना कुछ फर्क आता है। दैट डिफरेंस कैन बी नोन एज एरर, उसको हम एरर बोलते हैं, जैसे प्रोबेबल एरर अभी हमने कैलकुलेट किया। ऑल्सो इट कैन बी टर्म्ड एज रेजिड्यू, उसको हम रेजिड्यू भी बोल सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस है, दैट इज रेजिड्यू। तो कुछ भी बोल दे, एरर या रेजिड्यू। अच्छा, वो जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। लाइक एक्चुअल वैल्यू इज 40, एस्टिमेटेड वैल्यू इज 45। तो दोनों का जो डिफरेंस है इट बिकम्स -5। अगर ये 35 आ गया देन इट इज 5, एंड इफ इट इज सेम देन इट कैन बी 0। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, anything can be possible. So errors in case of regression equations are positive, negative, 0. So it can be all of these. Okay. Now, then 37 is not relevant now. 38. Two lines of regression becomes identical. Though equations है but line identical है, that is coincident. देन आर की वैल्यू क्या होगी, या तो +1 या -1। ऑप्शन डी, ए और बी। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दोनों कोफिशिएंट की लिमिट क्या होगी। सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, नो लिमिट। व्हाट शुड बी द लिमिट? द लिमिट इज प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। बिकॉज हमें पता है आर कैसे आता है, इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर ये 1 से एक्सीड करता है तो इसका रूट भी 1 से एक्सीड करेगा। अगर वो 1 से एक्सीड किया दैट मींस r will also exceed 1, which is not possible. Therefore bxy and byx इनका जो प्रोडक्ट है that should not exceed 1। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1। Then regression coefficient remain unchanged due to, किसका इफेक्ट नहीं होता है, shift of origin, origin का इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। 41. Coefficient of correlation between two variables is -0.9. This is R. R is given in the question. Find determination, that is R square. तो -0.9 का स्क्वायर करेंगे, you will get 0.81। 0.81. So question number 41 का option number B. This is coefficient of determination. Next is if the coefficient of correlation between the two variables is 0.7. अगर coefficient 0.7 है, then what is the percentage of variation unaccounted for? Unaccounted निकालना है, that is non-determination। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करना है। so it is 1 minus r square, so it is 1 minus 0.49, that is 0.51, so 51%, so it will become 51%। okay, all right, so this we have done। now let's do some questions, some random questions from set B। जितना भी रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स डू सेकंड वन। कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज 15। कोवेरिएंस तो 15 है। व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन? सी वी हैव डन द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय नीटा x इनटू नीटा y। ये आपका फॉर्मूला है, राइट? And covariance is given 15 now, covariance 15 है।
अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है नीटा एक्स इंटू नीटा वाई, तो इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? तो दिस प्रोडक्ट शुड बी 15 और मोर देन 15, 15 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 15 से कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आर विल एक्सीड 1। इफ वी टेक लेट्स से 10, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है तो आर की वैल्यू कितना आएगा? 1.5, विच इज नॉट पॉसिबल। बट इफ वी टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 15, लाइक इफ वी टेक 30, तो क्या आएगा? 0.5। इफ यू टेक लेट्स से 60, 0.25। तो जितनी बड़ी वैल्यूज होगी कोरिलेशन उतना कम आएगा, उतनी वैल्यूज की छोटी आएगी। So therefore, the product of these two should be less than or more than 15. Answer will be more than 15. Option number B. Okay. Now third one is very similar question. If the covariance between two variable is 20, so this time covariance is given. Variance of one of the variable is 16. ये variance हो गया. What should be the variance of other variable? दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो R इज इक्वल टू 20 अपॉन नीटा एक्स कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय नीटा वाई। नीटा वाई वी डोंट नो, एंड व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ नीटा वाई? सो नीटा वाई की वैल्यू 5 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, बिकॉज अगर नीटा वाई 5 से कम हो गया then R will exceed 1, which is not possible. So neta y should be 5 or more. तो फिर नीटा y का स्क्वायर कितना होना चाहिए? इट शुड बी 5 स्क्वायर और मोर, दैट इज 25 या उससे ज्यादा। सो ऑप्शन नंबर ए, नीटा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। Okay. Asha is asking, today is the last session or another session is there? See, last session is pending for 5th of September. And on 5th of September, there will be last chapter of the subject, that is index number. So index number is our last topic. So that is on our Tuesday, that is 5th of September. Okay, next. Fourth one. If y is equal to a plus bx, what is the coefficient of correlation between x and y? दोनों में कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना होगा? 1 और -1? क्या लगता है? व्हाट शुड बी द रिजल्ट? 1 और -1? सी, इन केस ऑफ सिंगल इक्वेशन कोरिलेशन हम कैसे निकालेंगे? y is equal to a plus bx. So in order to find the correlation, we have to use the formula mod b upon b, or you can write b upon mod b, one and the same thing. So if the value of b is positive, let's take b as -4. If b is -4, then what will be the result? 4 upon -4 will give us -4. If b is positive, let's take this time +4, then what will happen? Then it will be 1 positive. So in short, we can say that if b is positive or greater than 0, then r will be +1. If b is negative or less than 0, then r will be -1. तो r की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। Okay. Then Swati is asking, do we have revision classes? See, you can do revision on Students Clinic app. तो वहां पर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, नो नीड टू वरी।
live as well as recorded, both of them. Then fifth one, if R is 0.6, then what is the coefficient of non-determination? So 1 minus 0.6 square. So 0.6. Option number D. Then let's do some question from now. These are the mixed questions on correlation as well as regression. So if you have any doubt, let me know. So Roshan is asking set P, question number 3. Okay. Anyone is having doubt in set B? Set B में अगर कोई doubt है तो you can ask. So till then I am taking one question from question number 23. Okay. Let's do this 23. If the regression coefficient of y on x, coefficient of correlation between x and y, and the variance of y, these three values are given, find the variance of x. तो आपको एक तो given है b by x minus 3/4, then correlation √3/2, and variance of x. तो neta y square, it is 4. तो neta y कितना हो गया 2, right? Then find the variance of x. So you have to calculate neta x square. So you can use the formula for b by x. क्योंकि b by x हमें given है, तो b by x का formula use कर सकते हैं, r into neta y divided by neta x. So minus 3/4 equal to √3/2 into neta y upon neta x. So 2 and 2 will get cancelled. Then what is left? Neta x is equal to √3 into 4 upon minus 3. Okay, this is the value. अब क्या करना है आपको? नीटा x का स्क्वायर निकालना है. तो स्क्वायरिंग, on squaring, √3 will become 3, 4 will become 16, minus 3 will become 9. So therefore, final answer is 16 upon 3. This is the variance. Vivkesh Kushwa is saying, can I ask one question? Yes, you can let me know which question is the doubt. You can ask your doubt here, no need to worry. So 16/3 is the answer, option number B. Then Mohammed Shoaib is asking question number 8 from set B. Let's solve this. Question number 8 says x and y is given, u and v is given. Coefficient of correlation is 0.93. What is the correlation between u and v? Okay. Now see, x is 2, 4, no, 2, 3, 5, 4, 7. x की इक्वेशन किसके साथ बनती है? u के साथ में बनती है. u is -3, -2, 0, -1 and 2. So what was the format of equation? u is equal to a plus bx. ये इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्मेट. इस तरह की हमें इक्वेशन बनानी है. तो x में क्या करें जिससे u आ जाए? तो 2 and -3 कितना गैप है? 5 का.
3 and -2 गैप ऑफ 5, 5 and 0 अगेन गैप ऑफ 5। तो हमें सब में क्या दिख रहा है? 5 का गैप दिख रहा है। तो यू कैन फॉर्म द इक्वेशन u इज इक्वल टू x माइनस 5। ये बन रही है आपकी इक्वेशन, राइट? दिस इज योर इक्वेशन। अभी क्या करना है आपको? सेकेंड y के लिए भी लिखना है, तो y and v 4 6 7 8 10, and then v is given -4 -2 -1 0 and then 2। so y and v में क्या रिलेशन है? there is a difference of 8, you can see। y में से 8 subtract किया, you get v। to write down the second equation, v is equal to y minus 8। So from here you can extract the value of b and d। So formula क्या था? r u v is equal to mod b into mod d divided by b into d multiply by r x y। Now b का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है? 1, y value is also 1 multiply by correlation 0.93। Therefore final answer is same 0.93। तो भी हमने ये भी डिस्कस किया था, if b and d both are having same sign, अगर दोनों का साइन सेम है, then r u v is exactly same as r x y। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी with same sign। ओके, then Vidisha is asking question number 11। Okay, in question number 11 it says if the rank correlation coefficient between the marks in management and mathematics for a group of students is 0.6, so this is correlation coefficient। Sum of square of difference in rank, this is sigma d square। So r is given and sigma d square is given। Find the number of students in the group। So here we can use the formula 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1। This is the formula। So 1 minus 6 into 66 upon n cube minus n। In place of r, you can write 0.6। Now let us simplify. So 6 multiplied by 66 is how much? 396। So 396 upon n cube minus n is equal to 0. So 396 divided by 0.4. So n cube minus n is equal to 990। Now you can simplify this equation or put the option, you will get your answer। If you put option number A, 10 cube minus 10, you are getting 990। So option number A is correct। Option number A is correct। Okay. Then the next doubt is 14th question। Okay. So let us solve 14 also। The coefficient of concurrent deviation of p pair of observation। Now you have to be careful with this language, p pair of observation। P is basically here number of observation। So P means number here, was found to be 1 by √3। So this is coefficient, that is correlation। If the number of concurrent deviation was found to be 6, concurrent deviation को हम क्या लिखते हैं? C, C का वैल्यू है 6। Then find out the value of P। So apply the formula for concurrent deviation, RC equal to plus minus root plus minus
2c minus m upon m. This is the formula. Now, plus minus root plus minus 2 into c. C is 6 minus m. M is number of pairs of observation, so deviation, and then equal to how much? 1 by root 3. Now, दोनों तरफ रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. So 12 minus m upon m is equal to 1 by 3. Now perform the cross multiplication. 36 minus 3m equal to m. 4m equal to 36. m is equal to 9. तो m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 9. m is 9. Now next क्या करना है? We know that m is equal to n minus 1. Right? तो 9 is equal to n की जगह पे क्या लिखना है? p, because क्वेश्चन में p लिखना है. Therefore, value of p is equal to 10. So in this way, you can get the answer. Okay, Sindhu is asking, what about remaining problems? I think, Sindhu, you are attending the session for the first time, right? I think you don't have the idea how the session goes on, because it is a 2-hour session, and in 2-hour session we have to complete the full chapter. So we cover all variety of the questions, and since we have covered all the variety, so similar questions you have to try in your homework. And in case of doubt, you can ask uh, in the next session or in the application, that is Students Clinic application. Okay, Sindhu. So I think you are from June 24 attempt or for December 1. Let me know. Then Swati is asking set B question number 24. So it is one of the easiest question. Y is equal to 3x plus 4. This is the regression line of y on x. Arithmetic mean of x is minus 1. Now what will be the arithmetic mean of y? अगर x का अर्थमेटिक मीन -1 है, y का कैलकुलेट करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन. इक्वेशन में सीधा सा सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर. सो y इक्वल टू 3 into -1 plus 4. द रिजल्ट इज 1. तो y का मीन कितना आ चुका है? 1. Okay, Sindhu is having next June 2024. Okay, that's great. You have a lot of time. No need to worry. Now the next doubt which is asked is 246. See, question number 2 is a direct question. Coefficient of correlation between x and y. So series x is given, series y is given. Simply find out sigma x, sigma y, sigma xy, x square, and y square. And then put the values in the formula. You will get the answer. So this 2 is basically a direct one. Then next one is fourth question. So Roshan is asking fourth and Chanchal is also asking question number 4. Okay, let's do this fourth one. The following result relates to bivariate data on X and Y. And later on it was discovered that 2 pairs of observation were wrongly taken. And the correct pairs of observations are given. So this green one is wrong and blue wala hai correct. Now you have to do the correction and find out the correct correlation coefficient. Okay.
Now see, the formula for correlation coefficient is n sigma xy minus sigma x into sigma y upon root n sigma x square minus sigma x whole square multiply by root n sigma y square minus sigma y whole square. This is the formula. अब इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी आपको करेक्ट करनी है. सो सिग्मा एक्स वाई ओरिजिनली कितना गिवन है? सिग्मा एक्स वाई ओरिजिनली इट इज 414. Then sigma x is 120. Sigma y is 90. Sigma x square is 600 and sigma y square is 300. ओके, इन सब में आपको करना है करेक्शन. तो करेक्शन के लिए जो वैल्यू गलत है उसको हटाओ, जो सही है उसको जोड़ो. सो लेट अस रिमूव द रॉन्ग वैल्यूज फर्स्ट. 12 एंड 11, तो एक्स वाई क्या होगा? तो माइनस 12 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 8. दोनों रॉन्ग वैल्यूज को हटा दिया. नाउ एड द करेक्ट वैल्यूज. 10 इंटू 9 इज करेक्ट एंड 8 इंटू 10. Now from here you will get correct xy. Similarly sigma x में x की दोनों वैल्यूज को हटाओ, रॉन्ग वाली -12 -6. करेक्ट वैल्यू इज 10 and 8. Then same for y की रॉन्ग वैल्यूज को रिमूव करना है. -11 -8 +9 and +10. x square, so -12 square -6 square plus 10 square plus 8 square. Then y square का sigma, तो -11 square -8 square plus 9 square plus 10 square. Now you have to find all these values and then substitute in the formula. You will get your answer. So Tina is asking, set C is also coming in exam C. All the set C questions are not very lengthy. Okay, some are lengthy and some are normal. So all those which are normal questions that can be done, but those which are very lengthy that are not required. So that is never asked in examination. So this kind of question can be asked because this one is not lengthy. So you can try this. So calculate this and let me know the answer. So 404, then 120, 90, then last one 600 minus 144 minus 36 plus 100 plus 64, 584, and then the last one 300 minus 121 minus 64 plus 81 plus 100, 296. नाउ अब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारी वैल्यूज आ चुकी है. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द रिजल्ट. ओके, चंचल इज आस्किंग क्लास एंड 12 क्वेश्चन नहीं करना है. यस, दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रेलेवेंट. So now fourth is also done. Then I think we have covered each and everything now. All these are rank based questions. So rank one also we have covered in the previous session. So rank correlation, concurrent deviation,
So everything is, I think, done now. So you can practice this. See, all these, most of the questions you can practice from set C because these questions are not lengthy. Like if you see from reverse order, question number 19. The coefficient of correlation between the cost of advertisement and sales of a product. So these two are the variables और इन दोनों में आपको correlation calculate करना है. Simply put the values and get the answer. This is the direct and normal question. 18th में 18th आपको mean and standard deviation is given, correlation is given. You have to find the sum of regression coefficients. तो दोनों regression coefficient find करने हैं, direct question है. This is not at all lengthy. Then 17, two regression lines आपको given है, variance is also given. Then we have to find out the standard deviation of y. This also we have covered. This is again very easy. 16 is similar. 15 is a direct question. 14th is also a direct question. दोनों regression equation पता लगानी है. 13 is also direct question. Simply you have to find a particular equation. 12th में also you have to find the equation y on x. All these are simply based on the direct formula. 11th one, find the coefficient of concurrent deviation. So in concurrent we have done plus and minus sign first and then you can simplify. Then 10th is also concurrent. Directly you can do rank. 8th one is also rank, that can be done. 7th is rank, this also you can do. Then question number 6, okay. Somebody has asked us down question number 6. Let's do this also. For two variables x and y, it is known that covariance is 8. Covariance is given. Then r is the 0.4. Correlation is also given. Variance of x is 16. And sum of square of deviation taken from mean is 250. All these data are given. So you have to find out n, that is number of observations. Number of observations. So what is the formula for standard deviation? We have done that. Root sigma x minus x bar whole square upon n. Now variance of x is 16. So what is the standard deviation? 4. Then sum of square of deviation of y taken from mean. This is sigma x minus x bar whole square divided by n. So n is not available. So let's square both sides. 16 is equal to 250 upon n. So therefore 250 divided by 16. Okay, that will be the answer. Okay, I think there is some error in this. The sum of deviation is from y, not from x. So that belongs to y. So you cannot write in x. It is sigma y minus y bar whole square upon n is equal to neta pi. So this 250 belongs to y. So remove this 250 from here. Okay. So sigma x minus x bar whole square upon n. So these two values we have substituted. Then what else is available? R and correlation is available. So there is one formula for R. Covariance upon neta x into neta y. This is the formula. Now, if you substitute the value, covariance is 8, neta x is 4, neta y is not available, equal to R. R is 0.4.
Now let us simplify this. So neta y equal to 8 upon 4 into 0.4. So how much you are getting? 5. So neta y is 5. So here you can write 5. Now squaring both sides, 250 upon n is equal to 25. Therefore, n is equal to 10. So in this way, you can calculate the value of n. The value of n is 10 in this question. All right. So this was option number D, question number 6. So all this is done now. 5 is not relevant. So set C is also covered. So set A, set B, and set C. Each and everything we have covered. All doubts are done. Right? Ritu is asking, we have to do additional question bank from every chapter. Yes, it is better to solve additional questions also. So you will have good practice for that. And I will give the solution for that also in the students clinic app. So you can be able to match your answers and solution. Okay. Then Chanchal is asking question number 8. See, in question number 8, this is a question based on rank correlation. So in case of rank correlation, you have to check first whether there is a tie or not. So if there is no tie, apply the small formula. If there is a tie in ranks, then you have to apply the bigger one formula. So check this out, like you have to rank first. First rank will be given 277. Second rank will be allotted to 75. Then third rank will be 58. Fourth rank is 50. Fifth rank is 743. Sixth rank will be 34. Then 7, 8, 9, 10. In this way, you can rank each and everything. Zoology also you have to rank first. The highest are 79 marks, first rank. Then 70, second rank. 69 is the third rank. 65, fourth. 63rd will be fifth rank. 62 is sixth rank. 59 will be seventh. 56 will be eighth. Then 9, and then 10. So in this way, you can rank them and then find out the difference and apply the formula 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. So in this way, you can calculate. Then Grisha is asking, if you have to find correlation coefficient, then which formula do we use? See, whenever you have to find correlation, some particular name will be written, whether you have to use Spearman's or concurrent deviation, or you have to use Carl Pearson, some name will always be given. So accordingly, you have to use the formula, right? Something will be written. If it is given rank, then use Spearman rank correlation. If it is nothing is given, if nothing is given, then the best one is Carl Pearson coefficient of correlation that you have to use. Okay. So now Sindhu says good explanation. Sakshi says all concepts are clear. That's great. So now everything is clear, I hope. So you have to complete all these questions by today. And if there is any doubt, let me know. We will be discussing. So till then, bye everyone. Take care and see you soon on 5th of September. That is the last session of the course. Okay. So bye everyone and take care.